वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो गणेश विघ्नेश गजाननं प्रभु सर्वविघ्नविनाशाय गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। वाणिहिरण्यगर्भाभ्यं नमः। शशिपुरन्दराभ्यं नमः। ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। वेलकम टू मेट्स ओडिया। समस्त को आज क्लास को स्वागत। 11th रो क्लास हमरो चली रही समस्त को पुणी थे शुभ सकाल। आमर एटा 11th रो क्लास रही जो मैंने 12th रो पिला जो से महामाराथन टिके डेरी रे आसीबो 7टा बेले। आज जेहेतु ये क्लासटा शेड्यूल हो जाइए तेणु आज क्लासटा 7टा बेले आसीबो जो मैंने 12th रो पिला माने जो मैंने ऑलरेडी अपियर करिया को चाहछन्ती एग्जाम को तो सेमानक पई 12th रो पिलांग पई 7टा बेले क्लास रही। 11th पिलांग पई आज 6टा रु 7टा वर्तमान पई क्लास रही। 7टा बेले तुमरो 12th रो महामाराथन रही। तो जो मैंने महामाराथन रो पिला रही से रिक्वेस्ट करी 7टा बेले काइंडली जॉइन करेंगे कारण 7टा बेले आज क्लास को कर दी जाइए किंतु आसंता काली 6टा बेले क्लास रहिबो। ठीक अछि ओके ठीक अच्छे। सो 12th रो जो माने पिला से माने कहि रखुची से माने 7टा बेले जॉइन करंतु आ जो माने 11th से माने वर्तमान रहंतु। शुभम ठीक कहले आमर फिजिक्स माराथन रे जहा क्वेश्चन हेची सब गुडा को क्वेश्चन जहा जहा डिस्कशन हेची सब गुडा को आमर 12th एग्जाम रे आसीची। प्रशांत धଳ जमा रागिबा किछि आवश्यक नाही बाबा जेहेतु ये क्लासटा किछि दिन हैला 3-4 दिन हैला महाशिवरात्रि दिन ही ये क्लासटा शेड्यूल हेची तेणु ये क्लासटा मु आग नहीं जाउची तापर 7टा बेले तुमरो क्लास नेबे प्लीज प्रशांत रागनी। आ गतकाली 12th रो महामाराथन रे किछि समस्या हिथिला सेति पई मु दुखित समस्तंकु मो तरफरु क्षमा प्रार्थना करूची जे गतकाली जेहेतु एभलिया समस्या हि जाइछि एभलिया समस्या प्रकृति रे वास्तव रे समस्तक पई बहुत दुखदायक एभली गोटे समय बर्तन घड़ी मुहूर्त एग्जाम समय यही एग्जाम समय रे समस्ते चेष्टा करंती जे जेमती हेले अधिकार अधिका टाइम देबे पढ़ा को। स्मार्ट बोर्ड संदीप गुरु मो पाखरे स्मार्ट बोर्ड नाही बाबा। स्मार्ट बोर्ड रो प्राइस पाखरकी 1 लाख ताको सेटअप करिया को 1.5 लाख। मु एते बड़ धनी लोक नुह छोटिया मोटिया गोटे टीचर तेणु क्लास पढ़ाउची तेणु प्लीज काइंडली इथरे एडजस्ट करो प्लीज ओके। हिमांशु कुमार यस केमिस्ट्री भी सबू क्वेश्चन आमर आज स्ट्रेटेजी मु देबी आज मु चैप्टर वाइज स्टार्ट करबी तो 7टा बेले 12th रो स्टार्ट होची। ठीक अछि तो आमर 11th पिला जो माने अछंती से माने रुहंतु 12th पिला 7टा बेले प्लीज जॉइन करंतु। थैंक यू अभिषेक थैंक यू वेरी मच ओके। तो 12th रो 7टा बेले हबो। ठीक अच्छे तो आम देखा जे आमर गत क्लास रे जो माने आसी आयोनिक इक्विलिब्रियम से क्विक रिविजन पचार दूची। अच्छा मते कह आरएनएस थ्योरी ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी और लुईस थ्योरी आमर 3टा थ्योरी रही। मते वर्तमान समस्ते कह जो माने 11th पिला से क्वेश्चन जे एसिड आरएनएस थ्योरी अनुसार एसिड माने कौन एसिड माने सी को आयन दबो acid on dissociation gives which ion according to RNS theory। RNS theory अनुसार acid को आयन देइथाए प्रश्न समस्तक पई RNS theory अनुसार क्यों आयन एसिड देइथाए। वेरी गुड शुभम एसिड देइथाए H प्लस आयन एवं बेस gives which ion according to RNS theory base gives which ion। so एसिड दोची सबले H प्लस आयन एवं बेस को आयन दोची बेस दोची OH माइनस आयन। वेरी गुड शुभम। सो एसिड होची हमर H प्लस आयन एवं बेस होची OH माइनस आयन। तापर ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी अनुसार बेस कौन करे एसिड तो H प्लस आयन देइथाए। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी अनुसार जेतोले एसिड को हमें
water रे dissolve करिबा बा solvent रे dissolve करिबा, it will undergo dissociation, and after dissociation it will give rise to H plus ion. But what happens to the base part? Base कौन करता है? According to Bronsted-Lowry theory. Bronsted-Lowry theory अनुसार base कौन करता है? Acid donates H plus ion. But what about base? Base कौन करता है? Any idea? Shubham? No idea. Shubham? I am expecting answer from you. What will be the answer for RNA for Bronsted-Lowry theory? So according to Bronsted-Lowry theory, the base will always accept the H plus ion. Base will accept the H plus ion. Okay. Next is your Lewis theory. Next is your Lewis theory. So Lewis theory jiva. Next is your Lewis theory. Next is your Lewis theory. So Lewis theory jiva. Lewis theory रे कौन कहूचे? Lewis theory रे एसिड कोटा हबो ना जीए लोन पेयर को एक्सेप्ट करिवो, और बेस कोटा ना जी लोन पेयर को डोनेट करिवो, राइट? ओके, सो तीनटा थ्योरी हम गत क्लास रे पढिथिले। बर्तन हमें डिटेल्स रे देखिबा जे यार एडा होची टोटल डिटेल्स जे आरएनएस थ्योरी आ लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी आ लुइस थ्योरी, राइट? एभले हमर रहिछि डिटेल लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी आ लुइस थ्योरी, राइट? एभले हमर रहिछि, ठीक अछि। तो हमें बर्तन देखिबा जे आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। प्रणाम सुश्री। सुश्री सॉरी आजिर क्लास टा तुमरो 7टा बेले क्लास स्टार्ट हबो, ठीक अछि? आसंता काली टू 6टा बेले स्टार्ट हबो। आज गोटी दिन ही तुम माने काइंडली एडजस्ट कर दियो, जेहेतु हमरो ए क्लास टा 11th रो क्लास टा ऑलरेडी सेट अप हो जाइतिला, तेनु ए टाइम रे क्लास स्टार्ट करिया को बाध्य होछि। आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड रो आयनाइजेशन केमती हेताय? हरिओम पाणिग्राही प्रणाम। प्रणाम हरिओम पाणिग्राही। सो वीक एसिड रो आयनाइजेशन केमिति हेताय? वीक एसिड रो आयनाइजेशन केमिति हेताय आ तार प्रोसेस कोन? सपोज हमें गोटे एसिड नोचे दैट इज Ha, व्हिच अपन डिसोसिएशन, डिसोसिएशन हेले कोन कोन आयन दबो ना H प्लस आ OH माइनस। तो H प्लस जेतोले वाटर से तो मिसिबो से कोन हे जिवो H3O प्लस। H plus when added with water gives rise to H3O plus, and what happens to the A minus? It will be A minus. So Ha plus H2O gives rise to H3O plus plus A minus. Clear? H3O plus plus A minus habo. ताले further यदि हम देखिबा what is the expression for rate constant? Rate constant यार कौन हबो? यार rate constant रो expression कौन हबो? So according to law of mass action, according to law of mass action by according to law of chemical equilibrium, according to law of chemical equilibrium बा law of mass action भी कहि परियो। According to law of chemical equilibrium कौन हबो ना Kc is equal to concentration of product, that is H3O plus multiplied by A minus divided by concentration of acid multiplied by concentration of water, right? So ये भलिया arise हबो, right? ठीक कथा ना? So ये होची Kc। Kc माने कौन? The rate constant in terms of concentration. Kc is known as rate constant in terms of concentration. So we can also say that equilibrium constant in terms of concentration. Concentration term रे equilibrium constant। 11th पिला गले कुआडे आजी? 11th पिला देखो 2 दिन हला क्लास शेड्यूल हेची, समस्त आसी बोली कि आशा विश्वास थिला, किन मात्र 13 जन पिला। 13 जन रो 3 जन ही 11th पिला, बाकी 10 जन 12th पिला। 11th पिला आसीबा कथा, 11th पिलांको पई क्लास, किंतु पिला ही नाहंती। ये की कथा रे बापा? फर्दर जदि हमें देखिबा कौन देखिबा ना सपोज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हमें के नहीं गेले, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हमें कौन नहीं गेले ना के नहीं गेले। के इज वन टाइप ऑफ कांस्टेंट। ताले कौन हबो ना
let's put concentration of water as K. What is K? K is the concentration of water. K is the concentration of water, but K is the con concentration term or constant term. शुभम 12th क्लास पिला सब जॉइन करिए स्मृति तो क्लास आसुनी स्मृति मझे मत बहुत हैरान करदेला जे सर आप ओपन होनी एटसेट्रा 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 किंतु वर्तमान क्लास रे देखा नहीं स्मृति रे मैं 2 दिन है क्लास शेड्यूल होइछि नुह जे क्लास शेड्यूल हो नथिला तो इथिपाई तुम मान सजा होची तुम मान गोटे 7 दिन जाए क्लास हबनी 11th पिलांगर 7 दिन जाए जमा क्लास ही हब नाही ठीक अच्छे ताले जदि आमे देखिबा कौन हबो आप रे आज क्लास हबो मुनिबी ताले कौन हबो ना केसी इज इक्वल टू हमर H3O प्लस को H3O प्लस एज यूजुअल पके दियो फर्दर कौन नबो ना कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस को A माइनस एज यूजुअल पड़ जिवो तापर फर्दर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बदल रे K पकेबा HA बदल रे HA so HA concentration of HA is the acid part water बाई हमें K लिखिबा ताले एटा कोन हबो Kc into K is equal to केते हबो ना H3O plus रो concentration multiplied by A minus रो concentration divided by HA रो concentration clear so this will be the expression सेमिति ही हबो शुभम काहेकि तममानक पिला आज आसी नांती आस्तिले हे नथंदा बहुत कम पिला 11th रे रहिचंती एते कम पिला रे केमदि क्लास हो जे ठीक अच्छे तो Kc into K is it समस्त बुझी पाला Kc into K Kc into K is equal to हमर आउट नुआ कांस्टेंट लेट इट बी Ka that is your dissociation constant ताको आजिवो dissociation constant which is equal to H3O plus multiplied by A minus एक्चुअली शुभम एई किछि दिन तुमरो 12th भाई भौणी मान को टाइम देबा को पड़िबो जेतु इवनिंग रे देवरचंद सर क्लास नउचंती मॉर्निंग रे मु क्लास नेबी तेनु मॉर्निंग रे मो पई आ टाइम ही नाही जे तुम मान क्लास नेबा पई तेनु मु आप पे ही घंटे 2 घंटा खंडे क्लास नेबी बट यूट्यूब रे क्लास किछि दिन पई स्थगित कर देबी एमिति किछि नो केबे कोनसे टीचर काहा ऊपर भी रागी नथांते एटा समस्त जानछन कार गेमिंग हाई 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 okay so Ka is known as what is Ka Ka is your dissociation constant or ionization constant eta pila mane bahut important so what is Ka Ka is known as dissociation constant or ionization constant right K को हमें कौन लिखि परिबा K is known as where Ka is equal to dissociation constant or ionization constant or ionization constant right and what will be this K this is dissociation constant or ionization constant ताहले एई जो K रो एक्सप्रेशन कोन ना Kc multiplied by concentration of water कारण concentration of water को हमें K नहीं दीजिए so Kc multiplied by concentration of water is known as your Ka by dissociation constant by ionization constant मन रख जोड़ा strong हे थाए strong acid हे थाए ता पई dissociation constant बा ionization constant रो वैल्यू 1 हे थाए ता पई केते वैल्यू होबो 1 किंतु जो गुडा का वीक एसिड हेतिबो तार वैल्यू very much less than equal to less than 1 not equal to less than 1 तो एटा में कोन हबो ना for strong acid weak acid काहे कि नियाला
कारण वीक एसिड नेले भी हबो। So for strong acid, Ka, that is dissociation constant, is always equal to 1. ता माने हमें कौन कहि परिबा, ता माने हमर concentration of H3O plus multiplied by concentration of A minus divided by Ha is always equal to 1. That means जेतिकी मोल नहीं थिबो सेतिकी मोल सम्माने पाई जिवो। पूरा कौन कह जाए, तृण को नुण समान, मुंडी मुंडा ना गाउली भाषा रे मुंडी मुंडा, तो समान जेतिकी नहीं थिबो सेतिकी समान, किछि भी बलिबार नाही। तो स्ट्रांग एसिड जो गुडाक हबो से गुडाक शीघ्र शीघ्र H प्लस आयन दे 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 कौन हे जिवे, सेमानकर डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 हे जिवो। ताले फॉर वीक एसिड कौन हबो, फॉर वीक एसिड Ka will be always less than 1, and this is equal to ताले कौन हबो ना concentration of H3O plus multiplied by concentration of A minus is always less than concentration of Ha, is always less than concentration of Ha. Clear? Is it clear to everyone? तो यार वैल्यू सब H रो concentration रु कम हबो। ता माने हमें कौन बुझिबा जे H तो तमे 10 मोल नहीं थियो ताले 8 मोल ही हबो बा 6 मोल ही हबो। 10 मोल गुडा को संपूर्ण भाव आयोनाइज हबो नाही। जेमिति कि तुमको बे जदी पढ़ाउची 100% ताले तमे एफर्ट जदी 100% देलो ताले तमे होचो स्ट्रांग एसिड। तमे जदी एफर्ट दोचो 20% 30% से अनुसार तमे होचो वीक एसिड बा वीक स्टूडेंट से डाइन को जीवो। बुझियला? तापर हम गोटे गोटे क्वेश्चन नेकी करबा, गोटे जनरल एग्जांपल गोटे नबा एसिटिक एसिड रो गोटे एग्जांपल नबा बा जे कोनसी गोटे एग्जांपल नबा। ठीक अछि, एच सिंपली एच रो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन केते आसीबो। एच मीडियम एसिड ए बापारे तमे स्ट्रांग एसिड वीक एसिड ये बाहर करला मीडियम एसिड। तापर नुआ थ्योरी आसीबो शुभम भारतीय थ्योरी। एच will be equal to H plus A minus। ठीक अछि, ताले एठी कोन हबो ना एच कथा जदि हम एठी फर्दर देखिबा, लेट्स द इनिशियल कंसंट्रेशन। गुड मॉर्निंग चिन्मय, गुड मॉर्निंग मैती मालती। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एच जब तुम्हें 11th रो अछि कृष्णप्रिया, गुड मॉर्निंग कृष्णप्रिया, तमे ता आसुनो। चिन्मय मालती जो तुम्हें 11th रे अछो ताले जॉइन करो, जो तुम्हें 12th रे अछो ताले स्किप कर दियो, 7टा बेले तमर क्लास अछि। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड माने एच रो इनिशियल कंसंट्रेशन पोज केते नि आइछि ना सी, केते नि हला सी। आ एडा कोन होइछि, एडा जदि हम देखिबा ना इनिशियली H प्लस फॉर्म हे नथिबो, A माइनस भी फॉर्म हे नथिबो। सो concentration of Ha at initial level was C। ताले फाइनल कंसंट्रेशन केते हबो, एइठु ध्यान देकी देखो। एटा ध्यान देकी देखो, एटा 12th रे सॉल्यूशन चैप्टर रे बहुत इंपोर्टेंट पिला माने। 11th रो जो मान भी अछो एई पार्टटा कंप्लीटली ध्यान देकी देखो, कारण 12th रे तमानक पई एटा गोटे बहुत बड़ चैलेंज हे जाय पारे, न बुझिले असुविधा हबो डिसोसिएशन। तो एटा 12th रो सॉल्यूशन चैप्टर रे अछि, आको डिटेल्स रे बुझिया पई। तो एठी हम जे देखिबा यार, लेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, लेट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इज, डिसोसिएशन कांस्टेंट केते बर्तमान एटा को क्लास सुनील निजे को, एटा 11th ना 12th को क्लास तमे निजे ही को। अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट होची अल्फा। ताले मु जदी 1 मोल नै थिबी अल्फा मोल सरीबो, मु जदी 2 मोल नै थिबी केते मोल सरीबो को। मु जदी 1 मोल नैची ताले अल्फा मोल मोर डिसोसिएशन हबो, आउ ताले आउ बळका जेमिति सेमति पडिकी ही रहिथिबो। ताले मु जदी 2 मोल नउची केते मोल डिसोसिएट हबो को, 2 अल्फा। वेरी गुड। 3 मोल नेले 3 अल्फा मोल। अच्छा मु जदी सी मोल नउची, सी मोल पर लीटर ताले केते अल्फा हबो,
सुनील बेहेरा दल सिंह चिन्मयी तुमने 7टा बेले क्लास रे जॉइन कर वर्तमान पई ठीक ठाक अच्छी तुम्हें 7टा बेले क्लास रे जॉइन कर तुम सांग साथी को शेयर कर दियो आज जेमती हेले तुमनकर एग्जाम स्ट्रेटेजी डिस्कस करके क्लास करबा सो इट इज सी अल्फा मोल राइट दिस विल बी सी अल्फा मोल ताहले एठी फाइनल सी अल्फा मोल कोन हला सरीला आ बळिला केते तो एचे रो सी अल्फा मोल सरीला सिमिलरली सी अल्फा मोल सरीला माने एपटे सी अल्फा मोल एपटे भी सी अल्फा मोल फॉर्म हो सी अल्फा ताहले बळिला केते केते बळिला शुभम कृष्ण प्रिया कोने गले हमर आउ जने संतोषिनी गले कोडे बहुत पिला आसुना 11th तो कौन पढ़ा ना कि किंतु जेतोले 12th को जीव कॉन्सेप्ट न बुझी पारिबो सेतोले जानिबो बहुत पिला 11th रे पढ़ी नथंदी आ 12th रे भावंती मु होची गजपति मो पथरे नाही किछि भी कहार मती देखो को केते मोला बलिबो सी माइनस सी अल्फा सो सी अल्फा जेतु सरीला बळिला केते सी माइनस सी अल्फा मोल बुझी हैला ना डाउट रहिला जदि डाउट रहिला कुह जदि डाउट नहीं आगु को माडी चलीबा बुझी पारला सबो डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट ताले जदि मु एठे पकेबी कोन ना के दैट इज योर के माने कोन के होची हमरो डिसोसिएशन कांस्टेंट ताले हमरो डिसोसिएशन कांस्टेंट बुझीलानी शुभम तमे निजे देखिल परा निजे कहल परा सी मोल थिले सी अल्फा मोल सरीबो 1 मोल थिले अल्फा मोल सरीबो कारण अल्फा होची कोन ना अल्फा होची हमर डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा होची कोन डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 मोल थिले अल्फा मोल सरीबो 2 मोल थिले 2 अल्फा मोल सरीबो सी मोल थिले सी अल्फा मोल सरीबो ताले सी अल्फा मोल जदी सरीबो जेतु एटे सी अछि सी अल्फा मोल जेतु सरीबो बळिबो आ केते सरीला बळिला केते सी माइनस सी अल्फा बळिला सी माइनस सी अल्फा अरे तमे जदी घरे तुमको दिया हिथिबो 10टा मिठा सेइथरु तमे देखि देखि 6टा मिठा खाइ देलो अब मिठा बळिला केतेटा रसगोला बळिला केतेटा मिठा कथा कहयारु मोर मन पड़ती छेना पड़ माने रखिची आज ठाकुर को भोग करियो लगी ठीक है केतेटा बळिला ताले 10टा मिठा रु 6टा खाइ देला बळिला केतेटा सिंपल 4टा सेमदी सी मोल रु सी अल्फा सर सी मोल थिला सी अल्फा मोल सरीला आ बळिला केते सी माइनस सी अल्फा शुभम बुझिला बुझा पड़ला शुभम सुब्रजीत महापात्र तुम्हें 11th ना 12th सुब्रजीत महापात्र तुमको बुझा पड़िला बाबा ना स्टिल बुझी हैला नहीं सी अल्फा सरीला एटा होची सरीबार टेंडेंसी सी अल्फा मोल सरीबो यदि अल्फा होची डिसोसिएशन कांस्टेंट ताले सी अल्फा सरीबो अरे एटा 0 मोल फॉर्म हबो एटा 0 मोल इनिशियली 0 मोल इनिशियली एटा कोन इनिशियली आयोनाइज हेई नथिबो ना ध्यान देकी देखो बढ़िया शुभम आउ थरे कहि रखुची देखो ध्यान देकी इनिशियली जदी कहबा हमर इनिशियली सी अल्फा नीचे सी मोल नीचे कोन एसिड नैथिया समय हमर एपडे हेई नथिला कोडा H प्लस आउ A माइनस इनिशियली फॉर्म हेई नथिबो संगे संगे कोन फॉर्म हेई जोगी ताको वाटर डिसोसिएट करले टिके टाइम लागिवो आ टाइम के समय पर देखिला केते मोल डिसोसिएट हला ना सी अल्फा मोल फॉर्म हला H प्लस आयन सी अल्फा मोल फॉर्म हला A माइनस आयन ताले आउ एपडे एतिकी फॉर्म हला ताले H आउ केते बळिला ना C माइनस C अल्फा H बळिला C माइनस C अल्फा सो H हमर बळिगला C माइनस C अल्फा मोल बळिला एबे बुझा पड़छि शुभम 0 मोल इज रिलेटेड टू H प्लस आयन एंड A माइनस आयन शुभम आउ थरे कहि रखछि जे H एसिड नै थिले सपोज मोनर कहूछि एसिड अनुसार HCl नै थिले HCl तो संगे संगे H प्लस Cl माइनस दबनी किस समय पर दबो तो इनिशियली H प्लस रो कंसंट्रेशन और Cl माइनस रो कंसंट्रेशन 0 0 थिबो किंतु किस समय पर सपोज एटी तमे 10 मोल लेचो
किस समय पर कौन है ना 10 माइनस 10 अल्फा एटा केते हबो 10 अल्फा एटा भी 10 अल्फा मोल फॉर्म हबो किस समय पर संगे संगे हबार चांस उठुनी ठीक अछि ओके रुद्र द्वारा तुमरो 11th ना 12th बाबा ताले एठी हम जो देखिबा व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर के ए के ए रो एक्सप्रेशन कोन हबो के ए माने कोन डिसोसिएशन कांस्टेंट सो एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी दिस एटा बहुत इंपोर्टेंट काहे की कहूची ना एई जो कांसेप्ट ता तुमरो कोठी अप्लाई हबो एसोसिएशन डिसोसिएशन सेक्शन रे अप्लाई हबो जेतोले तुमे 12th को जीवो तेणु एई कांसेप्ट ता बहुत इंपोर्टेंट ठीक अछि सेठी तुमको पता रह जीवो अल्फा ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 सेठी तो बाया हे जीवो आई ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 पूरा सेठी पई एटा को कंप्लीटली बुझिबा दरकार ठीक अछि एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट रे जदि हम देखिबा एक्सप्रेशन कोन ना के ए इज इक्वल टू हाउ मच यस शुभम मु आज अवश्य इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज फास्ट पढिबी तापर सॉल्यूशन पढिबी आज स्ट्रेटजी डिस्कस करिबी बा के ए इज इक्वल टू हाउ मच के ए विल बी द concentration of H plus ion multiplied by concentration of A minus ion divided by concentration of HA आम ये वाटर नेले ही हम डिसोसिएट हम किंतु वाटर ऊपर डिपेंड करे ना कारण वाटर टा मल्टीप्लाई हे कि के वाटर टा मल्टीप्लाई हे कि के आम ऑलरेडी देखुले सो H प्लस रो एक्सप्रेशन जो देखिबा C अल्फा A माइनस रो C अल्फा डिवाइडेड बाय HA रो C माइनस C अल्फा ताले C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C into 1 minus alpha. So C square कटि जीवो ताले एटा केते जीवो C alpha square by 1 minus alpha. All the best for your exam कृष्णप्रिया साहू तुमरो बॉटनी एग्जाम आज भलरे जाऊ तुम बॉटनी एग्जाम थाई कि भी तुम केमिस्ट्री क्लास करूछ तेनो सैल्यूट टू योर डेडिकेशन वी आर प्राउड ऑफ यू very thank you हला सो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा ठीक अछि बुझा पड़िला ना डाउट रहिला तो फॉर एटा एटा जदि हम देखिबा स्ट्रांग एसिड वीक एसिड अलग अलग हबो फॉर वीक एसिड फॉर स्ट्रांग एसिड कोन हबो स्ट्रांग एसिड पई सबले मन रखता अल्फा र वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 1 स्ट्रांग एसिड पई अल्फा सबले 1 ही थाए माने संपूर्ण भाव रे डिसोसिएट हो जाय थाए तेनु के विल बी केते आसीबो देन के ए केते आसीबो के ए रो एक्सप्रेशन ना c multiplied by c alpha square by 1 minus 1 so c alpha square माने 1 divided by 1 minus 1 0 so infinite not so k infinite हबो नाही wrong answer तेनु ए जो हमरो कथा कहबा k cannot be determined for strong acid hence k cannot be determined for strong acid k cannot be determined for strong acid so Ka cannot be determined कौन पाई ना h 1 minus alpha is equal to 0 so 1 minus alpha must not be 0 but for weak acid alpha for weak acid बुझियला k रो वैल्यू स्ट्रांग एसिड रे अप्लाई करि परिबो नाही सेति पय आमे इनिशियली कोन नेथिले जे आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड बोली कि नेथिले इनिशियली एबे बुझि पारला शुभम काहे कि k रो वैल्यू डिटरमाइन कर परियोनी कारण 1 माइनस अल्फा टर्मटा कोन जे 0 आ समथिंग डिवाइडेड बाय 0 माने बहुत बड़ नंबर एटा के संभव हबो कि आमे कैलकुलेट करि परिबा कि हबो नाही तो हबो नै ओके तो वीक एसिड प्रणाम श्रिया रानी वीक एसिड कथा जो देखिबा अल्फा मस्ट बी लेस देन 1 अल्फा वैल्यू 1 टू कम हबो
So ka cannot be determined. So k ର expression କଣ ହବ? What will be the expression for ka? Ka will be equal to c alpha square divided by, अच्छा alpha is always less than 1 हेले आमे कौन कर परिबा? alpha को नेग्लेक्ट कर दे परिबा तळे, alpha को एठे नेग्लेक्ट कर दे परिबा, राइट? Alpha is much less than 1 na, so alpha can be neglected. As alpha is much less than 1, so 1 minus alpha can be equal to nearly equal to 1. बुझा पड़ला? केमिति तमे कहबे सर केमिति? सपोज मु कहूची 0.000000001 बा 0002 सपोज एतिकी अछि, एतिकी हला ताले 1 माइनस एतिकी कर केते अछि? 1 माइनस एतिकी केते बड़ नंबर हबो ना? जदि हम करिबा एटा कोन हबो? 0.999999998 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हाँ बस। अच्छा ये वैल्यूटा 1 सहित समान ना नहीं, तेणु 1 माइनस अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 for weak acid only, not for strong acid. Strong acid को जदि रखी दबो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 तो जे भी तुम्हारा इन्विजिलेटर थी, सॉरी जे भी तुम्हारा एग्जामिनर थिबे से कहे बापा रे ये बहुत बड़ा भूस पंडित, ये तो पूरा माने हमको आमठू ऊपर टॉपिक गला आकु नोबेल प्राइज दबा कथा कही गोटे जीरो देगी गोटे नोबेल प्राइज दे देबे, ठीक अछि? अल्फा स्क्वायर कैनॉट बी नेग्लेक्टेड कारण अल्फा स्क्वायर ऊपर अछि, तेणु नेग्लेक्ट करि हबनी। तो एटा कोन हबो ना c अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ka हैला, ताले अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू केते हबो? ka by c, ताले अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच ना रूट ओवर ऑफ ka divided by c. So this is the expression for your, this is the expression for degree of dissociation. This is the expression for degree of dissociation for a weak acid. So the expression gives the equation gives the expression for the equation gives the expression for degree of dissociation for degree of dissociation for a weak acid of an weak acid. Weak acid रो ही degree of dissociation बाहर करी हबो, strong acid रो degree of dissociation बाहर करी हबो नाही, काहे कि ना strong acid रो 1 माइनस अल्फा पार्टा 0 हो जिवो जोडा कि k वैल्यू इनफाइनाइट करे दबो, तेनु strong acid रो ऑलरेडी हम जानिचे अल्फा वैल्यू ऑलवेज 1, तेनु strong वैल्यू रो अल्फा वैल्यू बाहर करबा कि दरकार ही नहीं। क्लियर बुझिएला काहे कि हमें के कले काहे कि सब कले? इज इट क्लियर टू एवरीवन ना कार कोडी डाउट रहिछि? जदि कार कोडी डाउट रहिछि को एटा पिला माने गोटे मोनोबेसिक एसिड माने गोटी ही H+ आयन दबो, सिंधि जेतले हमें डाइबेसिक एसिड नबा तार अलगा हबो, ट्राइबेसिक एसिड नबा ताहले अलगा हबो। सो एटा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर मोनोबेसिक एसिड, एटा कोन को जे मोनोबेसिक एसिड माने गोटी ही बेस थिबो, ठीक अछि? गोटे क्वेश्चन दे फटाफट कर दबा, कर देले टिके आउ टिके प्रॉब्लम या रिलेटेड प्रॉब्लम कले टिके भल लागिवो ना, प्रॉब्लम न कले सकाळ सकाळ पढचे ना निद कागु पळे आस्थियोनी, कागु निद आसिलानी? सो क्वेश्चन रहिछि जे फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड रितेश कुजूर कहले क्लास 11th रो काहे कि यूट्यूब रे? रितेश कुजूर कोन 11th पिला पाप करछन तमे कोन पुण्य करछ? हां तमनो क्लास हो तांकर क्लास होबनी? 11th रो क्लास को केबेड होची? 12th रो क्लास हला तापर 11th रो क्लास हला, नहले शुभम भारतीया असि घरे पस दियो माने घरे पूरा गाली करियो समस्त को हमको, ओए पढो नांदी किछि नाही। सुज्ञानी
गुड मॉर्निंग। ओके, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड 11 12th रो क्लास 7टा बेले अछि रितेश कुजूर। ठीक अछि, आज पई 12th रो क्लास 7टा बेले अछि। ओ राजेश, तमे गुड मॉर्निंग सार कहि देगी तमे सुज्ञानी साहब नंबर आड हिच आज। फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड क्वेश्चन देखो, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड हैव आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट माने कोन? आयोनाइजेशन कांस्टेंट माने k रो वैल्यू कुहाइची। आयोनाइजेशन कांस्टेंट केते केते ना 17.7 multiplied by 10 to the power minus 5 and 1.75 multiplied by 10 to the power minus 5 respectively at 298 Kelvin, respectively at 298 Kelvin। आसंता काली टू 11th रो क्लास हबो नाही, आसंता शनिवार पुनी हबो। आउ आसंता काली टू 12th रो क्लास 6टा बेले हबो। आज गोटे दिन ही 7टा बेले रखा हिची, जेहेतु ए क्लासटा शेड्यूल हेतिला बाध्य हेली से क्लासटा नेबा पई। नेक्स्ट टाइम टू आसंता काली टू 12th रो क्लास 6टा बेले हबो आ 11th रो क्लास हबो नाही किछि दिन पई। So formic acid and acetic acid have ionization constant this and this respectively at 298 Kelvin. Calculate the relative strength. Calculate the relative strength of the acids. That is alpha 1 divided by alpha 2. Alpha 1 by alpha 2 बाहर करिया कुहाइछि एति बुझा पड़ला। alpha 1 divided by alpha 2 कैलकुलेट करिया पई कुहाइछि। पृष्ठ जी आज 12th रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िबा। alpha 1 divided by alpha 2 कन्यू पढ़िबा थिबा चैप्टर शो करनी। जगन्नाथ क्रिएशन मु नुआ पढ़ैतिबा चैप्टर शो करूनी आप रे। अच्छा मु आज देखिबी क्लास कोन होउची, इवनिंग रे ही सॉर्ट आउट करिवि बा डे टाइम रे सॉर्ट आउट करिवि। सौम्य रंजन गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मु टिके व्यस्त रहि जाइथिली, हमर गतकाली आईआईटी रे रिसर्च स्कॉलर डे थिला, तो सेथिबे मु गतकाली संध्या रे संपूर्ण भाବରେ दिन तमाम टिके व्यस्त रहि जाइथिली, बस आउट एग्जाम थिला। रितेश कुजूर 12th रो क्लास नेबी ना न नै की क्वाडे जिबी हे 7टा बेले अछि क्लास रितेश। सो जदि हम देखिबा ध्यान देकी देखो, फॉर्मिक एसिड अछि। फॉर्मिक एसिड माने कोन? HCOOH। फॉर्मिक एसिड अछि HCOH, ताकू जदि हम आयनाइज करबा H+ + COO- हबो आ एठे अल्फा 1 लेट इट बी अल्फा 1 केते हमकु जणा नाही। अल्फा 1 केते जणा नाही, अल्फा 1 जणा नाही बोले कोन हबो? अल्फा 1 जदि जणा नाही ताहले हम कोन करबा? किंतु हमकु क्वाइछि आयनाइजेशन कांस्टेंट माने K1 क्वाइछि। K1 एठी क्वाइछि। K1 केते ना 17.7 into 10 to the -5। ठीक अछि। फर्दर हमरो अल्फा 1 इज अननोन। अल्फा 1 इज अननोन, जणा नाही। फर्दर सिमिलरली हम जो देखिबा एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड को आयनाइज करबा कोन हबो? H+ + CH3COO-। आयनाइज कला परे कोन हबो ना एठी K2 दिहाइछ। K2 इज हाउ मच? K2 इज 1.75 into 10 to the -5। अल्फा 2 हमको जणा ही नाही। अच्छा किंतु हमको बाहर करियार अछि अल्फा 1 by अल्फा 2। अल्फा 1 by अल्फा 2। यस, दीड जागर जदि देखिबा दीड जागर H+ केतेटा रहिछि देखो ध्यान देगी। एइडे H+ गोटे अछि, एइडे भी H+ गोटे ही अछि, तेनु दीड जागर कंसंट्रेशन टर्म समान बोली कि निया जिवो। सो C2 एडे भी कंसंट्रेशन टर्म जहा अछि C नेले एडे भी कंसंट्रेशन टर्म C ही निया जिवो। काहे कि कारण दीड जागर H+ गोटे गोटे मोल बाहर बुझिएला। तेणु इनिशियली हम गेस कले जे दी जन जगह कंसंट्रेशन समान अछि बोली, नहले रिलेटिव स्ट्रेंथ बाहरी परिबो नाही।
ଏବେ ଫର୍ମୁଲା ପକ, put the formula, get the answer. Alpha 1 is equal to କଣ ଆସିବ ନା K1 by C1. K1 କେତେ? K1 ହଉଛି 17.7 into 10 to the power minus 5. 17.7 into 10 to the power minus 5. C1 ର value ହଉଛି C. ଠିକ ଅଛି? And what is K2? Alpha 2. Alpha 2 is equal to K2 by C2. K2 केते? K2 is 1.75 into 10 to the power minus 5. 1.75 into 10 to the power minus 5 divided by C2 minus C nejibo. So further alpha 1 by alpha 2 केते आसीबो? Alpha 1 by alpha 2 it will be 17.7 into 10 to the power minus 5 divided by C whole divided by 1.75 into 10 to the power minus 5 divided by C. Sorry, alpha ର formula कौन थिला ना root थिला. Oh, thank you Subha. So it will be root ରହିବ, right? Root over of this one divided by root C. Root over of this one. So root over of this one divided by root C. So this will be root over this one by root C. This one by root C. This one by root C. ताले एटा कौन हबो ना root over of 17.7 into 10 to the power minus 5 divided by root over of 1.75 into 10 to the power minus 5 multiplied by root C by root C. Root C will be cancelled out. ताले एटा कौन हबो ना 10 to the power minus 5 10 to the power minus 5 cancel out हो जिवो. So it will be root over of 17.7 divided by 1.75 is equal to how much? Calculate करके तुम मैंने कहबो how much? मगर much. Too much. पिलाने सुनी थो. It is too much. It is मगर much. So हमें calculate करिबा 17.7 divided by 1.75 is equal to 10.11428 or 43. 10.1143. 10.1143 रो रूट बाहर करिबा. So 10.1143 रो रूट जदि बाहर करछे 10.1143 it will be 3.180. 3.180 বা 3.18. So relative आसीगला हमर relative strength आसीगला बा alpha 1 by alpha 2 आसीगला केते 3.18. Is it clear? 3.18 आसीगला. Clear समस्त को ना कार कोठी डाउट रही छी. समस्त को बुझा पड़िला ना डाउट रही. गोपाल चंद्र साहू केतबेले आउचो? श्रिया रानी केतबेले आछो? तमे 12th क्लास रो की 12th क्लास रो जदी ठीक अछि छाडी दियो. प्रधान आस्तो सियार पीडीएफ मिलिबो. गोपाल चंद्र साहू कोन जे दिने नै जण नै गमा पुनिया रे माई माई एबे आसिले केमि हबो जे एबे आसियो तमे कहबो मु बुझी देबी. अरे घंटा आगु आस्थान बुझी थांदो. एटा 11th रो कांसेप्ट 12th पिला मानन पई एटा नुह. 12th पिला मानन पई 7 बेले क्लास हबो. श्रिया रानी यार पीडीएफ मिलिबो हला. डोंट वरी. दिने नै ओलिए नै गमा पुनिया रे माई माई एटा गोपाल एटा 12th रो कांसेप्ट नुह 11th रो कांसेप्ट. तेणु न बुझिले छाडी दियो. स्किप इट. एटा 11th पिलांगर वर्तमान क्लास चलछि. 12th पिलांगर क्लास हबो आउ टिके गले. एबे होमवर्क रहिला 11th पिलांग पई समस्त ए होमवर्क को करिगे आस्तिबो. नेक्स्ट क्लास रे यार डिस्कस करबा आंसर. क्वेश्चन दोची ए वीक मोनोबेसिक एसिड. मोनोबेसिक एसिड मु तापर पर डिस्कस करबी डाइबेसिक एसिड रो केमदी अल्फा वैल्यू बाहर करबो. ट्राइबेसिक एसिड हेले केमदी अल्फा वैल्यू बाहर करबो. सिमिलरली हमें डिस्कस करबा जे वीक मोनोएसिडिक बेस, डाइएसिडिक बेस एटसेट्रा, polyacidic base एटसेट्रा. weak monobasic acid has a dissociation constant. A weak monobasic acid has a dissociation constant केते रहउची equal to dissociation constant equal to 1.6 into 10 to the power minus 3 minus 5 sorry minus 5
at 25 degrees Celsius. Calculate the degree of dissociation. Calculate the degree of dissociation of 0.1 molar at the same temperature. ठीक अच्छे ये क्वेश्चन समस्ते करिकी रखिथिबो मु जाली 12th क्लास नेबी ता भितरे मोर आउ टिके काम अछि काम सारी की 12th क्लास नेबी क्लियर तो ये क्वेश्चन समस्त को रहिला ये क्वेश्चन समस्ते करिकी नेक्स्ट क्लास को आसीथिबो जी जी न आस्थिबो ता मन को बाडा हबो पुणा पकेबी टेम्परेचर अलग देनी सेम टेम्परेचर को आइछि शुभम एट द सेम टेम्परेचर को आइछि शुभम देखो टेम्परेचर बदली नाही तो एठी हमर सरिला आज रो क्लास नेक्स्ट क्लास रे हम देखिबा पॉलीबेसिक माने डाइबेसिक एसिड ट्राइबेसिक एसिड ए भले आइ कि पॉलीबेसिक एसिड रो केमदि हम बाहर करबा कोन सी रो अल्फा रो वैल्यू केमदि हम बाहर कर परियो पॉलीबेसिक एसिड रो सिमिलरली बेस कथा भी देखिबा वीक बेस रो केमदि हम बाहर करबा के ए आ सी भितरे कोन रछि रिलेशनशिप के आ अल्फा भितरे तापर हम देखिबा फैक्टर सेपरेटिंग एसिडिक स्ट्रेंथ आ बेसिक स्ट्रेंथ तापर आयनाइजेशन ऑफ वाटर तापर पीएच एवला टाइम लागियो टिके टाइम लागियो ए चैप्टर सरू फेब्रुआरी सॉरी मार्च अधा सर जिवो बा मार्च अधा ही जिवो भितरे सर थांदा किंतु किछि दिन क्लास ही परनी हबनी भी 11th रो क्लास 12th रो क्लास हो तापर जहा देखिबा तो थैंक यू ऑल ऑफ यू चलो बाय बाय टाटा जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय महाप्रभु जय जगन्नाथ कहला माने कि गोटे अद्भुत भाव आसे ना जगन्नाथ ही हमर ओडिया रो आ उत्कल रो सारा विश्वर भूखंडर प्राणर केंद्र लक्ष्य ओडिया मौनी मौडमणि ओके चलो।